I think, hi everyone. I think we are live. Uh, Hopefully, we are live. I think I'm doing from a different location after a long time. So you would not find the background, but our very first old background, which used to be when we kind of started. I think we built this screen to kind of emphasize the financial well-being, and significance of financial well-being as part of your asset allocation, as part of your retirement goals, as part of your day-to-day emergency fund, your medical expenses and all of that. I hope सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार मैं अपने भी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्विकली जाके चेक कर लूंगा कि मैं लाइव हूँ। एंड आई थिंक मैं लाइव हूँ, विच इज़ अ गुड साइन। क्वेश्चंस में ले लूंगा जो भी यूट्यूब पे आएंगे। आई थिंक जो आज का मेन डिस्कशन है वो ये है कि मार्केट आई थिंक आर trying to show some strength in pockets of the different sectors. And the subject I chose as wealth wave because I think आज उसका दिन है। I think आज some of the companies are doing extraordinarily well. So मुझे लगा कि it was good that when we discussed it on Saturday around different baskets. I think this basket came as one of the most underperformer basket in very recent time because of sudden kind of correction in that space, and I think it gave a lot of you an opportunity directly to participate, right? And very glad to see so many of you could kind of add along and could add with some capital and really kind of now um can run on that. At least your entire drawdowns, or at least half of it, or at least quarter of it, are in your favor, which is a good sign. Let me also confirm if I'm live, right? Which is important. I think I can live. I can see hello Shailendra also. तो क्विकली क्या देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ कहाँ पे है. वी कैन मेक इट शॉर्ट. आई थिंक द टीम आल्सो हैज नॉट सर्कुलेटेड Q&A form today, which is fair. Anyways, I can check if there are questions on live here, and I can quickly also check the screen as in terms of the the Q&A sheet as well. क्विकली क्या एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में कहाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अगर है तो कहाँ पे है, कहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिख रही है. हमारा अपना जो टूल है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ. आई नो आपने देखा है पहले, इंट्राडे को हम देखते हैं. अच्छा, डिस्क्लेमर है, कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स. आई थिंक वी हैव टू वेरी क्लियरली एम्फेसाइज फ्रॉम नाउ ऑन दैट अगर आपको कोई स्टॉक दिख भी जाता है उस टूल की वजह से, देन ऑफ कोर्स नन ऑफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस. It is purely for reference purpose, right? And there are a lot of changes happening in terms of how much data, what kind of data, whether it is current data, past data, we can kind of show. So we will follow whatever guidelines are available. मेरा एक पॉडकास्ट भी आने वाला है आई थिंक आज या कल में, which I did on factor investing. जैसे ही लाइव आएगा I will ask the team to share with all of our audience, and also will add it to manager update maybe. It's about factor investing and how you can participate. I think a lot of discussions I see in the group happening around a lot of ETFs which are available. How can they participate? So मैंने काफी सारे वहाँ पे आपको लाइव डेमो दिखाया है उस पॉडकास्ट में कि आप उन ETFs में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो. अप टू 2 फैक्टर, 1 फैक्टर तो ETFs हैं ही, 2 फैक्टर ETFs, 3 फैक्टर 4 फैक्टर इंडिया में है ही नहीं. So if you have to join that journey, I think the best option is small case, right? One of the gold fee small case for that example. So screen share कर लेते हैं एक बार. YouTube पे जाके देख लेते हैं. ओके, यहाँ ओके. चलिए, गुड रिकवरी इन AM फ्यूजन, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टॉक्स. थोड़ा सा ही बचा है वेल्थ वेव्स में. कौशिक इज वेरी हैप्पी. अल्फा ब्लेंड में मल्लिकार्जुन इज वेरी अनहैप्पी. Kaushik is, I think, similar. I think he's a different Kaushik. He's saying that Alpha Blend is not performing well. Can your team book some losses and allow some good rebalance to cope up with the losses? We will do, Kaushik. Chakrabarti ji, do not think that we are not actively checking. We are, and there will be a time when you will see all of those active rebalances, and all will be, hopefully should be, that the cope up part should be addressed, right? मैं क्विकली आपका स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. एक्चुअली सैटरडे थोड़ा ट्रैवल है, so maybe Zoom meeting maybe could be a challenge.
तो एक बार वो देख लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार सिस्टम खोल लेता हूँ, सो दैट जब मैं शेयर करूँ स्क्रीन तो आपको एग्जैक्टली वो डेटा दिख जाए। आप लोग मुझे बताइएगा यूट्यूब पे जब आप डेटा देख पाओ। मैं एक बार शेयर करने जा रहा हूँ। गिव मी सेकेंड। वन ऑफ यू कंफर्म इफ यू कैन सी व्हाट आई आल्सो सी। ओके, सो मैं शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन नंबर 2। स्क्रीन नंबर 1 ये है, स्क्रीन नंबर 2 ये है। ओके, लेट मी शेयर। आई होप इट इज़ कमिंग नाउ। अल्फा ब्लेंड से अल्फा गायब हो चुका है अभिनव के हिसाब से, which could be a thing, of course, why not, and it may happen. And therefore when the rebalance would happen, and if alpha is gone, it would take away the the stocks from that basket. एंड जैसे मैंने लास्ट सैटरडे भी बताया था कि हमारा जो अभी का अल्फा ब्लेंड है वो मल्टी कैप है, टोटल मार्केट पे है, और इट falls or it will fall under the new category of discretionary baskets, right? जो हम लोग discretionary और नॉन डिस्क्रिशनरी में सेपरेट आउट कर रहे हैं। Alpha blend is falling, or all of our baskets currently are falling under discretionary, right? And we will have new non-discretionary alpha variant and momentum variant, which will be actual weekly. These are not kind of designed or kind of, because they were multi-factor. They were not alpha as a factor, right? They were alpha, volatility, quality, a lot of fundamental screening is done much before alpha blend is presented to you. I simply mean that these are not non-discretionary 100%. So that's how it is. बट अभिनव आज तो खुश हो गए थोड़ा। आई थिंक वेल्थ वेव में हमारी सैटरडे बात हुई थी। आई थिंक अगर इफ यू आर टॉकिंग टू द सेम अभिनव, देन आई थिंक सैटरडे तो इतनी बात हुई थी ऑन इन द जूम कॉल अबाउट यू, इफ यू आर द सेम अभिनव, दैट क्या करना है। एंड देन मंडे आई थिंक वेल्थ वेव gave us a slight kind of corrective, but then Tuesday, Wednesday I think has been doing well, and I hope you could add if you're talking to the same Abhinav. चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे सारे थीम इंडेक्स हैं कंट्री के, यूजली सारे ही हैं आई थिंक जितने भी निफ्टी ने बनाए हुए हैं। एंड अल्फा मोमेंटम फ्यूजन के 8 से नीति इन्वेस्टर हैं, और ऐड करूं या रीबैलेंस का वेट करूं? अभी इमीडिएट रीबैलेंस है नहीं, मतलब बहुत होगा भी बहुत छोटा होगा, तो आप पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप, अगर आपको लग रहा है कि आपका एक क्वांटम अमाउंट नीचे है और आप उसको थोड़ा एवरेज अप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। अच्छा, हमारे सारे सेक्टर्स अभी स्ट्रांगली बेरिश मोड में ही हैं। So it's not a great sign. We are not we are not out of pain. We are in pain. Correct. However, if you see this four quadrant is further divided into further four quadrants. तो इसको हम कैसे read कर सकते हैं कि हमारा strongly bullish leftmost quadrant है, weakly bullish right, then weakly bearish is the right. I mean, I think मेरा माउस पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं अगर मूव करूंगा आई थिंक दिखना चाहिए। लेट मी सी क्या दिख रहा है आप लोगों को। आई थिंक दिखेगा, हाँ राइट, तो मेरा माउस भी दिखेगा। तो ये वाला स्ट्रांगली बुलिश है, वीकली बेरिश है एंड स्ट्रांगली बेरिश है। तो सारे सेक्टर्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वीकली बेरिश ही हैं, बट कंपैरेटिवली अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, देन द फाइनेंशियल सर्विसेज इज कमिंग एज द least weakly bearish, right? It is falling under the the first quadrant, and then healthcare, followed by healthcare, followed by mid small financial, consumption, services and auto, राइट। सो जितना जो भी पैसा बन रहा है या बनने की अपॉर्चुनिटी है या स्ट्रेंथ सबसे पहले बाहर आती हुई दिख रही है, वो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में क्लियरली दिख रही है, निफ्टी हेल्थ केयर में दिख रही है, मिड स्मॉल फाइनेंशियल में दिख रही है, एनबीएफसीज में दिख रही है, वेल्थ वेव में दिख रही है, निफ्टी कंजम्पशन में दिखना शुरू हुई है, एंड सर्विसेज में, राइट, एंड ऑटो। बट हैविंग सेड दैट, ये अभी भी वीक ही है, वी स्टिल इन द लास्ट क्वाड्रेंट। इसको यहाँ आना पड़ेगा, वीकली बेरिश आना पड़ेगा, फिर वीकली बुलिश आना पड़ेगा, फिर जाके स्ट्रांगली बेरिश में आएगा, सो स्ट्रांगली बुलिश में आएगा, आई मीन। सो स्टिल अ जर्नी, राइट, टू फॉलो। थोड़ा सा सारे स्ट्रेटजी बास्केट्स देख लेते हैं, थोड़ा उससे एक और व्यू मिल जाता है। सो अगर आप देखोगे तो जो कोई भी सेक्टर इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सारे स्ट्रांगली बेरिश ही हैं, चाहे वो कोई भी मोमेंटम बास्केट्स हों, अल्फा बास्केट्स हों, वैल्यू बास्केट्स हों, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी 500 हो, निफ्टी 750 हो, सारी बास्केट्स हमारी वीक ही हैं। थोड़ा थोड़ा निफ्टी ग्रोथ सेक्टर जो एक इंडेक्स है उसमें
थोड़ा थोड़ा क्वालिटी कंपनी जो 30 का एक इंडेक्स है उसमें, और लो वॉलेटिलिटी का जो एक इंडेक्स है वहाँ पे थोड़ा मूवमेंट आना शुरू हुआ है. Can you participate in Nifty quality low volatility outside of small case? You have to go to a website called इंडिया पैसिव फंड्स, और यहाँ पे आप जाके फिर से मैंने जो पॉडकास्ट किया है मैं वहाँ पे आप लोगों को ये सब दिखाने वाला हूँ, सो दैट आई डिडंट वांट टू रियली, आई हैव शोन इट टू आई थिंक माय जूम ऑडियंस, बट अब यहाँ जाके you can quickly go to screener here. This is a public website, fantastic work, and you can quickly select say your underlying index as Nifty quality. सॉरी. तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि अगर वो वाला इंडेक्स बनाया हुआ है तो निफ्टी, क्या नाम था हमारा, एक बार वापस जाके देखेंगे. निफ्टी 100. ओके, निफ्टी 100 एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि निफ्टी 100 क्वालिटी 30 फॉर एग्जाम्पल, और लोवेटी 30. अगर आप देखोगे इंडिया में तो अप्लाई करोगे फिल्टर, तो यू विल फाइंड दैट इंडिया में एक इंडेक्स फंड है एंड एक ईटीएफ है सारे फंड हाउसेस से. इन टोटल एक एचडीएफसी ने ईटीएफ लॉन्च किया हुआ है, और एक एडलवाइस ने एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया हुआ है इस बास्केट का. और वही आप निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी देखते हो, सो 30 कंपनीज देखते हो यहाँ पे. तो उसके लिए आप देखोगे तो अगेन आई थिंक लाइव फिल्टर. हाँ, तो काफ़ी ईटीएफ्स हैं और कुछ कुछ इंडेक्स फंड्स हैं. यही जहाँ जहाँ सिंगल फैक्टर की बात होती है वी हैव इनफ डेटा, बट व्हेन इट कम्स टू मल्टी फैक्टर 2 3 फैक्टर इंडिया में कोई ईटीएफ वगैरह नहीं है. सो दैट इज काइंड ऑफ अ वे टू काइंड ऑफ शो यू कि आपको जानना है कि इसके अंदर क्या कंपनीज हैं, क्या मूव होना शुरू हुई हैं. तो यू कैन एब्सोल्युटली गो टू niftyindices.com and just go to that sector here. I can show you in my system, but ultimately क्योंकि यहाँ पे stocks के नाम दिख जाएंगे, तो I don't want to kind of show any stock names from my side directly, and therefore मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा कि कौन सी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आपको मूवमेंट, फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड आउट. जैसे निफ्टी 100 क्वालिटी 30 की बात हो रही थी. अगर आप इसे देखोगे तो आपको लाइव डेटा दिख रहा है. आई थिंक कितना लेट रिफ्रेश होता है ये मैंने ध्यान नहीं दिया, बट थोड़ा सा ही कुछ ही मिनट्स का डेटा पास होगा. तो ये आज के फॉर एग्जांपल दीज आर द कंपनी विच आर काइंड ऑफ say moving today, in this. And if you see low volatility, also just the low volatility, right, उसका नाम था low volatility, single factor था वो. single factor कौन सा था, I think निफ्टी low volatility 50 था, something on those lines था, right. I think क्या नाम था एक बार देख लेते हैं. निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी था. ओके, निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी. निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस टाइप की कंपनीज है, किस टाइप के सेक्टर्स हैं जो आज मूवमेंट थोड़ा बहुत दिखा रहे होंगे. अगर आप फैक्ट शीट खोलते हो तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि इसके अंदर किस समय एफएमसीजी में हाईएस्ट एक्सपोजर है, राइट. इन द लास्ट रीबैलेंस, ये क्वार्टरली रीबैलेंस होता है और 3 महीने में रीबैलेंस होता है. From last 1 year to 5 years to inception, of course, it has been doing fairly all right. Kind of a stable basket to have, and some alpha, small alpha over the base index. It does. I think बीच में हमने देखा हमारी communities में numbers कुछ post हो रहे थे. I think I later team told that somebody in the wider investment community has posted those numbers on LinkedIn, and unfortunately, the numbers were incorrect. They didn't have any period in terms of dates. And factor investing का भी same principle है कि if you follow it, you follow it. If you believe in it, you believe in it. There's a lot of academic work done over so many years, 100 of years now. I mean, 50 years in deep sense, and a lot of kind of statistical data is out, past data, to kind of imply that how this can create some layer of alpha. And of course, there's another science of pure active based, active style of management of money with no kind of passive style. Then those school of thoughts will be very contradictory views, and all views are welcome. Only you only have a buyer in the market if you have a seller, or vice versa. So you cannot make a trade, you cannot move markets without people having contra views and people having two side of the views. But false information is to be avoided. And we can always crunch data. So always, I mean, for example,
10-year rolling period returns, 7-year rolling period returns, if you see, none of the, I mean, all of the factor baskets have outperformed Nifty or broad market by 100 in 100% of times, right? There was zero instance of non-performance, not out, non-outperformance. If it is 7-year and 10-year rolling period, now if it is less rolling period, 3-year, 5-year, 1 year, then absolutely it can go totally, it can go totally opposite to the common assumption of generating alpha or bringing the volatility down. So that's why you have to define a period. Short period is anyways not a way to judge, and if you can always prove your point by showing different data points in terms of year to year, but always try to think about rolling returns, because anybody can pick a date to a date and tell you that this works, it doesn't work, which goes everything works, everything doesn't work. At the same time, if people you always ask people about rolling returns, that in that 10-year period, if anybody started at any point in time, right, any 10-year rolling period, because you can't time the market, and nobody should time the market, and nobody can, and therefore, if the rolling period return is outperforming, is creating alpha, then there's a good place to be. So some kind of allocation of your asset can be allocated absolutely there. So that's one part of the thing which I wanted to show. And also see market. I think market view now, okay, advance and declines. So if you see advance and declines on the theme index, if you see this, it will show you um, where is the, I mean, the numbers, because that something is more internal to us. But if you think about where is the cumulative, and some of the index are coming similar here, but where is the absolute advances happening, right, in terms of getting some strength. So that's consumption for you. Consumption has been kind of a Nifty consumption as a basket, which means the stocks of Nifty consumption has been kind of seeing some kind of started to see some strength. And then there's a basket called N500 multi infra, which again you can see on this website to find out Nifty consumption. Everybody's aware what Nifty consumption is, but you can also go to Nifty multi. What was the name? I think it was multi cap infra, right? It was a theme basket, maybe. Mm, where is that? Multi cap infrastructure, something on those lines, right? Multi-cap, I think that is what could be multi-cap India manufacturing, multi-cap infrastructure. Yeah, so that could be this one. I don't know why it is 50, 30, Nifty 500. I think, yeah, whatever. So, I mean, some of these basket, if you see, I think these are the companies which, these are the live data. I don't call out companies for no reasons. I mean, for the right reasons, I mean, but if you see, these are the company where the movement might be coming, which is multi-cap India manufacturing. I think we saw something multi-infra, maybe that's the nickname the team has given. And where's the decline? And decline has been under SME emerge, where the strength is further weakening. And so this is on the theme on the sectors. If you look at all baskets combined, right, in terms of everything, then I can see that momentum baskets are gaining some strength, especially in mid cap 150 momentum baskets are also gaining strength. Even 500 momentum baskets are gaining strength, and slight bit of strength in small cap. But again, this is no strength. Reason being, we just saw that sector momentum is very weak, right? And if you see market view on a last say few days, 1 week basis, and again say all the sectors together, so you will see that no, it's all red dots. It's not a very rosy picture. It is a bad picture, right? There is no orange. There is no green. If you look at weeks also, I don't think we have started to turn anywhere, except if you see, no, right? There's no greenery here. I am looking for greenery. I'm looking for orange, but yeah, I am not looking for reds. So again, there is nothing to be get very excited about. But good that some sectors have some kind of start, but whether that start uh,
Alphabet, ये क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं कश्यप. आई थिंक यू मिस द लास्ट मीटिंग. इट वाज अ डिसीजन एंड इट वाज हाउ आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ मोमेंट. सो या, सो वेबसाइट का एक्सेस आपको दे देंगे सर. आप बात करेंगे इस बारे में. ठीक है. So I kind of shown you market strength, and hope it is kind of an opportunity for me to kind of justify the title of the YouTube, that कहाँ आ रही है strength, right? So that is where you think of, but strength नहीं है अभी. We are in the last quadrant. That's what you have to be very very mindful of. Now I'll stop the sharing. If there are questions, I can of course take, and I can go to YouTube to also see the question. So, Kashyap, I think that you anyhow see that it's discretionary anyways. It's just that it is marked as weekly review. I think that is also changing to monthly review very soon, because I think I told in the Zoom meeting in our entire discussion that we have to have to label names of the baskets. We need to have clarity on what is the underlying index. We have to have clarity on which uh, is it a fundamental strategy, smart beta strategy, vector based strategy. So that is all a new regulation. As uh, I don't see any videos about individual factors. There is no mention of growth leaders. Can you talk on line about what is noting growth leader and how to talk? Yeah. So yeah, okay. We'll. So I think gamer guy. You were also, I think, not, maybe not in the last Saturday. I think it was a very detailed meeting around what is the new guidelines from the regulator in terms of how to make our baskets true to label, should be very clearly called out. The name shouldn't be confusing, right? It has to be exactly whether it is smart beta or fundamental. You know that all our baskets were very fundamental heavy in terms of we give a lot of importance to valuations, we give a lot of importance to balance sheets as part of our start framework, which we have done the review earlier. And because of that, there are two kind of audience which we have. For example, one who have come keeping in mind that because these are those layers of factors are added, be it whether it is value or quality to any any statistical strategy also, which is momentum or alpha. But there's an audience which needs alpha and momentum to be pure non-discretionary, right? So that is where the decision was taken that the current alpha blend is always was always uh, या रिव्यू आप चिंता मत करिए कौशिक जी. रिव्यू तो हम हर हफ्ते ही करते हैं. मैं आपको सिस्टम में बता रहा हूँ, मार्किंग बता रहा हूँ, बिकॉज मार्किंग इन द सिस्टम triggers the the kind of jobs from the platform to us or from users that overdue है. या तो हम लोग रिव्यू हम हमारा रिव्यू डेली का है. आई मीन आप उसकी चिंता मत करिए, राइट? So that we will do. Now that is something we will do, but I think that from March, right? That is was what I discussed last time. From March, you will see very different names. You will see very different kind of way of doing it, and it will be very clear upfront that क्या होने वाला है, राइट? कितना रीबैलेंस होगा, कितना चर्निंग होगा, क्या अंडरलाइंग है. तो वो मार्च 1 से आपको शायद दिख जाएगा. मार्च 1 से दिस मंथ में हमारा वही फोकस है, to be fully compliant, of course, as we have to, and so that as a user, you're absolutely clear that whether your portfolio choice is as per the defined the rationale in the small case from our side. So उल्टा लेके चलते हैं. फंडामेंटली स्ट्रांग होते हुए भी कंपनी गुजर पर क्यों गिर रही है? अल्फा ब्लेंड में अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी क्यों गिर रही है? बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट को प्राइस इन है. मार्केट कभी कभी रिजल्ट्स को प्राइस इन करके चलता है, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग होती है, राइट? आई मीन अ वेरी यूजुअल वे ऑफ पुटिंग इट. और चीज क्या है ना हमारे पास, आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक द कंफ्यूजन वाज क्रिएटेड, which we clarified in the last Saturday, that वो वीकली रिव्यू सबको लगता है कि वो वीकली रीबैलेंस होगा. मार्केट का अगर लास्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, विच इज द स्ट्रांगली बुलिश एज पर आवर डेफिनेशन, देन वीकली रिव्यू हो ही जाएगा, वीकली रिबैलेंस भी हो जाएगा, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट? एक नए रिसर्च की, नया मूवमेंट की. एंड मार्केट इज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑफ कोर्स यू कांट. बट when it's a pure momentum play or a alpha play on a weekly non-discretionary basket,
then it automatically will kind of cut all and move to the pure liquid, right? Because there is no strength. So वो सारे जो discretionary non discretionary baskets होंगे वो they will just come out of the market, right? When the market fall below that 25% strength, right? Which of course is not the case of any of the current baskets, because the current baskets are a mix of value, quality, and multi-factor always, right? That is how it is. Growth is also not a non-discretionary. It is a discretionary basket. It takes care of fundamental good companies where the EPS is growing at a good rate, where the results of the companies are good. They maintain, and I think innovative growth leaders will be the first small case which will be marked as quarterly, right, a review, because that is how the design of the small case has been. I don't know it's a good news or bad news, but innovating growth leaders is moving to uh, quarterly review, right? That's how I think Sharat is gamer guy. How does the budget affect stock selection in Goldfield? Like this time consumption is in focus. We will see some absolutely. I mean, we have seen just now live Investopedia. आप ही इन्वेस्टोपीडिया हो, आपको ही सब कुछ वैसे ही पता है, तो मुझे तो कुछ ऐसा सच बताना नहीं है, लेकिन anyhow you are the name is Investopedia, which is a good sign. So you have seen, right, how that what we saw in terms of few sectors, small, mid financial, or manufacture. I think what was that multi, right? What was the name of that which I just saw in the system? So ultimately, things will start. Our discretionary baskets are long-term oriented. Even non-discretionary or long-term oriented, non-discretionary need a different kind of temperament, right? They also kind of generate alpha as any discretionary would do. But people have to only opt for a non-discretionary basket when they can understand the kind of churn it will bring, right? They can understand that they are okay to do this kind of churning, and there will be periods of real churn and no value addition, right? But because the basket is non-discretionary, it will kind of run its own way of model portfolio and give you opportunities. There will be high volatility in those baskets. In bull market, absolutely great. They work, they outperform any other basket. But in such strong weak markets, you need a good multi-factor kind of basket where you have a layer of fundamental rich companies and all of that. So we'll करेंगे हम लोग I think मैं maybe एक webinar कर लूंगा, maybe live कर लूंगा, या एक Zoom where I will actually show you maybe a proper structure and breakdown कि क्या क्या strategies हैं, and then we'll continue from there. सो आर्ट्स नीति का मैंने अप्लाई कर दिया है, और कश्यप का रिप्लाई कर दिया है कि डिस्कशन क्यों है वो मैंने बता दिया था। गोल्फी वेबसाइट मिल जाएगी, बात करेंगे इस बारे में। बजट सिलेक्शन मैंने बता दिया है, और ट्रम्प टैरिफ का तो खैर है ही। आई मीन ट्रम्प का टैरिफ पे रिएटलेट चाइना ने ऑलरेडी आई थिंक स्टार्ट हो गया, वो लोग भी टैरिफ लगाएंगे। आई थिंक ये हमेशा सिचुएशन में जब भी कभी मीडिया में भी गया हूँ, इफ यू हैव सीन वन ऑफ माय लाइक कपल ऑफ माय मनी नाइन एंड इंटरव्यूज एंड ऑल मॉर्निंग वाले, देन ये सारी सिचुएशन ना वेट एंड वॉच ही होती हैं। हम लोग कितना भी इसको सोचें कि लेट्स हैज इट in our way. But I think just focus on your own investments, focus on your continued cash flow, your earning cash flow, you're deploying in the markets. It's part of your equity allocation. That's enough. Right? I think this is all noise. Baki ki. Okay, good news for Indian growth leader. Good news for Indian. Oh, very nice. आप लोग happy हैं quarterly rebalance से? देखो growth leaders actually में ऐसा basket हम हमेशा से उसी उसी approach से चलते हैं, उसमें उतना ही rebalance होता है, उतना ही कम rebalance होता है, right? So but just that things were kind of kept. Yeah, okay. Last week was why small case reduce the duration of payment from 1 year to 1 month or 3 months that cause increases. नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया. It is a circular from the regulator that we are not allowed to take more than 3 months of subscription from you as advance money. We can take up to 1 month, 2 months, 3 months, but not more. So it's not the platform has done. It is the regulator ask, right, from SEBI that nobody can take. So even if you are taking services from other research analysts, I'm sure outside small case also, nobody is allowed to take more than that now. एंड फ्रॉम अ फीस परस्पेक्टिव, फीस इंक्रीज नहीं की है। हमेशा से हमारा 1 मंथ प्लान तो पहले ओपन नहीं था, ओपन कर दिया क्योंकि 3 मंथ्स
आई मीन कैश फ्लो इज अ प्रॉब्लम. एंड पहले हमें 1 ईयर का मनी आता था, इफ यू थिंक अबाउट इट. नाउ 3 मंथ्स का आता है, तो हमारा कैश फ्लो 1/4 हो गया है. और 3 मंथ्स के प्लान जो थे, अल्फा प्लान फॉर एग्जाम्पल, जो 3 मंथ्स का था वो एक्जैक्टली उतना ही प्राइस है, वी नॉट चेंज, जस्ट दैट हमेशा क्या होता था कि 3 मंथ्स प्लान जो है उससे 6 मंथ्स का प्लान थोड़ा चीपर होगा और 1 ईयर का और चीपर होगा. तो इसलिए शायद आपको लग रहा होगा, बट अदरवाइज फीस तो सेम ही है. वी हैव नॉट रियली इंक्रीज द फीस फॉर 3 मंथ्स. आई होप इट वाज यूजफुल, एंड लेट्स कीप इट शॉर्ट. कोई और लास्ट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. एंड सैटरडे का जूम आई विल कंफर्म whether we are having this week or not, because as I said, in some travel, we may do it, but it could be more of a catch up. I may not be able to do data presentation on this Saturday, which is our week 2 schedule, so we might have to skip it. And week 3 anyhow is a topic of a choice, so next Saturday हम topic of a choice कर लेंगे, and depending on the topic you choose we can select the speaker, right? That is how we can do. ठीक है, हो गया. भानु प्रकाश, मैंने आंसर किया था अभी वाला, ट्रम्प के टैरिफ से और डिसीजन से कैसे इम्पैक्ट होगा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई थिंक लॉट ऑफ इट इज नॉइस. हम लोग को आउटसाइडर की तरह से उसको देखना है, और हमें अपने कैश फ्लोज पे ध्यान रखना है मंथ ऑन मंथ. एंड एज मनी कम्स टू अस ऑन अ फर्स्ट ऑफ द मंथ, वी हैव टू स्टार्ट काइंड ऑफ डिप्लॉइंग द कैपिटल इनटू ऑल एसेट्स, राइट? वेदर हमारा इक्विटी एसेट है, हमारा इमरजेंसी फंड है, हमें अपने आई थिंक फोकस ऑन अवर ओन basket. Rest will all follow. Hope the data was useful, and I'm looking forward for one of the podcast, and once I have the link, I'll share with you, which is on factor investing. Speak to you guys and have a wonderful day. I'll go to Zoom and stop my session.